Good morning, students. Today we are going to discuss about poverty. So the question arises, what is the meaning of poverty? Poverty is a situation in which an individual is unable to fulfill the basic necessities of life such as food, shelter, clothing, basic education and health care. So in simple language we can say that poverty is a situation when a person is unable to fulfill his minimum requirements like food, clothing, shelter, education, etc. Now, what are the characteristics of poor people, or how can we say that a person is a poor? They live in huts, some of them they do not have any shelter. In the villages they are landless, some of them have small pieces of land. They do not get sufficient food, starvation is common among them. Children suffer from malnutrition, they are uneducated and unskilled, so it is difficult to get employment. So we can say that the people are poor. Many of them suffer from diseases, health condition is poor, they do not get safe drinking water and sanitation facilities. The children do not get education, they borrow money from money lenders, fall into the debt trap, gender inequality prevails among them, women are the poorest among the poor. So these are the minimum criteria, then we can say that the person is poor. Now the next is measure of poverty. How can we calculate poverty? There are two branches of poverty. The first is absolute poverty and the second is relative poverty. Absolute poverty means when a person is unable to fulfill their minimum requirements. अगर कोई person अपनी minimum requirements को पूरा नहीं कर पाता है, in that case we can say that the person is poor. In the definition, it refers to the inability to secure basic necessities of life such as food, shelter, clothing, basic education and health care. Second is relative poverty. Relative poverty means comparison. When we compare the one person to another person, this is called relative poverty. For example, it refers to the poverty of people in comparison to another person, place or country. Example, a teacher is poor in comparison to a big businessman. A casual worker is poor in comparison to a teacher. India is poor in comparison to the USA. Somila is poor comparison to India. Now the next question is poverty line. Poverty line क्या होती है? Poverty line means the minimum income required for a person to satisfy his basic necessities of life is termed as poverty line. It is used to identify the poor people. अगर कोई person अपनी basic requirements को पूरा नहीं कर पा रहा है like food, shelter, clothes, sanitation, तो it means he is lying under the below poverty line. एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन को हम एस्टिमेट कैसे करते हैं? द मिनिमम फूड रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन इज़ कैलकुलेटेड इन कैलोरीज. कोई भी पर्सन जिसको जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं, अगर वो कैलोरीज पूरी नहीं ले पा रहा है तो डैट मीन्स ही इज़ पुअर. सेकेंडली, जितना उसको मनी वैल्यू चाहिए, जितना उसका एक्सपेंडिचर है जो उसे करना चाहिए, अगर वो नहीं कर पा रहा है डैट मीन्स ही इज़ पुअर. A minimum amount is added for shelter and clothing. The total amount is called poverty line. If a person income or expenditure is less than poverty line, he is considered poor, or we can say that a person is lying under the below the poverty line. India uses monthly per capita expenditure to identify BPL families. इंडिया के अंदर हम क्या देखते हैं? पर कैपिटा एक्सपेंडिचर देखते हैं. कैटेगरीज ऑफ पुअर. पुअर की कितनी कैटेगरीज होती हैं? फर्स्ट इज स्पेसिफिक कैटेगरी में ऑलवेज पुअर, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं. इट्स अ इमेजनरी लाइन जो पॉवर्टी लाइन के नीचे शो हो रहा है. ऑलवेज पुअर या ओके यूजुअली पुअर, ठीक है, यह आपके पुअर का क्राइटेरिया है. सेकेंड इज टर्निंग पुअर एंड ओकेजनली पुअर. मतलब ये कभी ऊपर आते हैं, कभी नीचे, कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं. ओकेजनली पुअर, कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस घट जाते हैं जिसके कारण वो कभी कभी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं. कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई या कुछ उनके साथ किसी भी तरह का
कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो वो हमारे आते हैं ओकेजनली पुअर में। थर्ड कैटेगरी आती है नेवर पुअर की, जो पुअर नहीं होते और ये पॉवर्टी लाइन से ऊपर होते हैं। ड्रॉबैक और लिमिटेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। ड्रॉबैक्स क्या है? इट डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन पुअर एंड वेरी पुअर। ये पॉवर्टी लाइन जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती है कि कौन पुअर हैं और कौन बहुत ज़्यादा पुअर हैं। इट कंसिडर्ड ओनली द मनी नीडेड फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। मैन नीड्स मैनी अदर फैसिलिटीज़ लाइक बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। It doesn't consider social factors like illiteracy, social discrimination, ill health, etc. सिर्फ पॉवर्टी लाइन हमारे को ये बताती है कि उसको प्रॉपर मीन्स मिले हैं या नहीं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी हुई हैं या नहीं। एक आदमी को सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सोशल फैक्टर्स हो गए, कहीं वो इलिटरेट तो नहीं है, कहीं उसके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, उसकी हेल्थ ख़राब तो नहीं है, लेकिन पॉवर्टी लाइन इन सारी चीज़ों को कंसिडर नहीं करती है। Now the next is head count ratio. Head count ratio is the proportion of population below poverty line, कि कितने लोग जो हैं below poverty line के population में से रह रहे हैं। We can calculate head count ratio by the formula total population divided by number of people below poverty line into 100. This is the formula of head count ratio. Next is causes of poverty. Poverty के main causes क्या हैं? The first is population explosion, second is limited resources, third is weak institution, fourth is corruption, fifth is lack of education and literacy, and the last is colonial past. ये सारे रीज़न हैं इंडिया के अंदर पॉवर्टी के